Ladies and gentlemen, this is On the Mic, and I have with me hip hop artist and rapper Iqbal. Hello. Thanks so much, man, for joining. And I've been meaning to do this for a while, and ever since I heard your song Paiyyah, actually, which I think is your latest one. Yeah. And for people who don't know, Iqbal has 2 mixtapes out: Jiski Laathi, Uski Bhens, and Baaghi. And then the latest song is Paiyyah. Obviously, you're on YouTube, as you know, and on all other streaming platforms as well. Obviously, I'll get into the politics and the social messaging, because obviously जो भी पढ़ता है जिसकी लाठी उसकी बैंस and बागी, you understand that there's political messaging there. But बड़ा stupid सवाल है potentially, because I know you like politics involved and something. Do you take inspiration from the great Allama Iqbal? हाँ नहीं, मतलब not at all. मतलब in fact I have obviously मैं कौन होता हूँ कहने वाला, लेकिन I have differences actually उनके. And नहीं, ऐसे नहीं है. No, obviously you can have ऐसे नहीं है, but मेरा actual last name is Iqbal. I mean, I know that, but like I thought कि capitals में इकबाल है तो maybe and political messaging है तो शायद नहीं, not so much, but there are other poets as well जिनसे मैं draw करता हूँ inspiration, फैज़ अहमद फैज़ वगैरह. Yeah, लेकिन not so much from Allama Iqbal. तो ये है, लेकिन लोग करते हैं, मतलब हाँ, sometimes people. Okay, so first stupid question out of the way. I can't promise कि कितने और होंगे, but like let's go back to hip hop. So बचपन से were you into hip hop, or like did you get into it later? Like how did you get into it? Rap music में बचपन से ही मैं था. मतलब the first time I heard rap music, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था. I was 12 years old, और मेरी cousin के पास iPod होता था. उस वक्त नया आया था वो शफल नैनोज होता था. तो उस पर मैं सारा टाइम आई वुड प्ले हर म्यूजिक, और मैं सारा टाइम जब भी उसकी तरफ जाता था मैं सुनता रहता था. एक दिन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस सॉन्ग कॉल्ड 50 सेंट का कैंडी शॉप, और मैंने वो गाना सुना, एंड माई कज़न कॉट मी लिसनिंग टू द सॉन्ग. और मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था, बिकॉज यू ऑलवेज हैड दिस डिफरेंट एक्सपेक्टेशन कि पॉप म्यूजिक साउंड्स अ सर्टेन वे. और ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम यू हेयर रैप म्यूजिक, आई एम श्योर स्मैक दैट, एकॉन, एमिनेम, सबको याद होगा क्लियरली वो कब कहाँ सुना है, बिकॉज उस तरह का हमने पहले कभी भी नहीं सुना. तो मैंने वो सुना, और माई कज़न वाज लाइक, इसकी तुमने वीडियो नहीं देखनी घर जाके. That's the one thing you would say to get you to like make sure that you would watch. The first thing I did, मैंने वो वीडियो देखी, I saw 50 Cent, I saw the way he was dressing और ये सब. खैर उसके बाद Smack That Eminem happened the same way. I looked at Eminem, and these were the coolest people उस वक्त जो मैंने कभी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे थे. तो mainly कहने का मकसद ये, I got into rap for all the flashy wrong reasons. कि वो मतलब no one looks like this, और ये मतलब etc. लेकिन वक्त के साथ साथ I started diving deep into what they were saying. Actually वक्त के साथ as you grow older and you mature, ठीक है, तो फिर मैं लफ्ज़ों पे ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गया, और बात क्या की जा रही है इस तरह आहिस्ता ड्यूरिंग माई O levels वाले दिन. तब I started listening to 90s आहिस्ता. मैंने Eminem वगैरह बहुत सुना, ड्रेक बहुत सुना. आहिस्ता I started moving पीछे. My favorite hobby, जब मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था, मतलब ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं थी मेरी O levels में भी, तो my favorite hobby was just consuming एक के बाद एक एल्बम. Groove Shark, I don't know if people know Groove Shark. Yeah. हाँ, back in the free day music, it was like I couldn't believe it was like a real thing. It was like Spotify before Spotify. Yeah. मतलब एक के बाद एक एल्बम मैं सुन रहा हूँ आहिस्ता. I discovered Tupac, and the first clip I see Tupac is the hologram. Remember the hologram concert? No, I don't. कोचेला पे Tupac का एक hologram concert होता है. मैंने कहा कौन बंदा है और ये इतना important क्यों है रैप म्यूजिक के लिए कि इसका hologram concert हो रहा है. तो I started listening to Tupac, और obviously वहाँ से I got into 90s hip hop, फिर underground hip hop, इस तरह चलता गया. Right, and obviously हम सारे Eminem और 50 Cent से शुरू हुए थे. But as you obviously grew older, you started looking towards the message and everything. I'm just curious, what do you think of Eminem now? Because recently people's opinions of him have changed. His music has obviously changed. Do you still relate? My respect for him or everything, and where I hold him has actually grown better over time, और ज़्यादा. अच्छा. ठीक है, मैं तो I've been listening to Eminem since कहने का अच्छा इस तरह Eminem कितना important है मेरे लिए. The first album I ever purchased अपने पैसों से was Recovery. This was 2010. तो मतलब तब से Recovery के बाद सारी albums
मतलब सुनी है, पीछे का सारा डिस्कोग्राफी सुनी है. अभी what he's doing, अभी वाली albums I like as well. I know कि he's more focused on rapidly rap, तेज flow करना, लेकिन the man can still put out records जो कि कोई इस तरह का नहीं करता. Darkness is one of the examples. अगर Darkness सुना है जिस तरह, the way he can tell stories इस तरह, this way people still fear getting him on a song. इस वक्त भी that speaks for itself. Yeah. So I'm one of those who's team Eminem all the way अभी भी. हाँ, I वही बात है ना, recency bias, people forget के बंदे की like पहले भी क्या किया हुआ है और क्या legacy वगैरह. Cool to, when it becomes cool to hate on someone, तो फिर then everyone jumps on the bandwagon. Exactly. But I was mostly thinking on the lines of के, and this is a big criticism of why people don't like him, and obviously सारे कहते हैं वो अच्छा नहीं है, a lot of people who criticize him, but it's his previous stuff that people like, it's not politically correct, he's not politically correct. And do you agree with that? Do you think that there's something there? Because मेरी जो take है वो ये है कि especially I think the first 3 albums Eminem की जो थी, they were very they're one of the like they're Hall of Fame albums, सही है, और they're very different, especially the first one, the जिसमें उसका वो album cover है, yeah, जिसमें वो किसी dog पे है, something like that. That's the first one. LP, हाँ. And it's just very dark. Hi, and my name is what? Yep. It's very dark stuff. But there's some, he's doing something. It's not just कि कोई बंदा पागल हुआ है. तो do you what I'm trying to say is people don't really understand that. They just see the music, they'll see the lyrics and say कि बंदा क्रैक है. हाँ, एक तो लोग उसको कॉन्टेक्स्ट के बाहर से देखते हैं, दे इग्नोर के किस पीरियड में वो चीज़ आ रही है. और हिप हॉप मतलब उस वक्त हिप हॉप में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाज वेरी प्रेवलेंट. अब उस वक्त मतलब द एमिनेम वाज नॉट द ओनली वन. सब रैपर्स वर मतलब होमोफोबिक लाइंस थी और वो सब थी, तो दे वर डेफिनेटली अ प्रोडक्ट ऑफ द टाइम. सवाल ये बनता है कि हैव दे ग्रोन सिंस देन एज टाइम्स हैव चेंज्ड? एंड आई थिंक मतलब क्लियरली Eminem has grown a lot since then. और इसके अलावा the other side is look at the boundary that he's pushed in terms of freedom of speech कि क्या क्या acceptable है, कहना है नहीं. ठीक है, मतलब हम पीछे भी चले हैं, ये हमेशा से there have been इस तरह के रोग्स जिन्होंने ये बाउंड्री पुश किया. उस वक्त लोग कहते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब उनको बहुत उठाया जाता है. जैसे एल्विस प्रेस्ली, डिस्पाइट मतलब जितना भी वो, जब एल्विस प्रेस्ली यूज्ड टू कम ऑन टीवी एंड डांस वगैरह, तो लोग कहते थे क्या वल्गर चीज़ है इसका. तो मतलब हाँ, तो एमिनेम ने भी बाय पुटिंग आउट रिकॉर्ड्स सच एज वाइट अमेरिका और ये सब, मतलब पीपल फॉरगेट के चलो ये स्टफ भी था, लेकिन ही हैड हिज पॉलिटिकल साइड एज वेल ऑलवेज. दिस इज नॉट समथिंग न्यू जो ट्रम्प वाली बातें अभी भी करता है. तो हाँ, तो उसने बहुत, जितना एमिनेम ने बाउंड्री पुश किया ना इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स एक्सेप्टेबल टू से एंड व्हाट्स नॉट, उसका मतलब दैट विल ऑलवेज हैव दैट इज ऑलवेज लिफ्टेड हिप हॉप. Yeah, I think one of the things that people miss out is कि Eminem ने जो persona अपनी create की थी, जो वो क्या उसे कहते हैं, Slim Shady वाली, he actually told people, उसने portray किया कि वो काफ़ी जो है messed up और हिला हुआ बंदा है, लेकिन उसने आगे से he points the finger back at you that you resonate with this shit, you've got this stuff going on inside you, and तुम मुझे बातें करते हो, तुम सारे खुद भी you are ऐसी हो. तो people miss out on that. It's not just wacky edgy music. I think people miss that point about him. But when did you know that hip hop was your calling? Like obviously you got into it at a younger age, but when were you like कि यार मैंने यही करना है अब आगे भी? This realization happened during my, मतलब मैं हमेशा से रैप में तो था ही नहीं, लेकिन this realization कि अच्छा this is what I want to pursue professionally happened during my A-levels तकरीबन. हाँ, I started writing 10th 11th grade में, लेकिन वो braggadocious किस्म का रैप obviously, मतलब because ज़्यादा मैं Eminem, Drake, J. Cole इस तरह सुनता हुआ रहा था, तो it was mostly mainstream type content. लेकिन A-levels में अच्छा there have been instances जब मेरा, हर इंसान का ना देयर आर मोमेंट्स जब उसका बबल बर्स्ट होता है. कुछ लोगों का कभी भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों का कुछ इंस्टेंस होते हैं वेयर दे रियलाइज कि अच्छा दुनिया मेरे से बहुत बड़ी है. और मतलब हमें कुछ भी नहीं पता, वी आर लुकिंग थ्रू दिस टनल विजन. और वो रियलाइजेशन जिस तरह मुझे वक्त के साथ कुछ पर्सनल इवेंट्स हुए, उसके बाद से मेरा म्यूज़िक पॉलिटिकल होना शुरू हुआ. एंड देन ऑल्सो आई डिसाइडेड कि इसको मुझे प्रोफेशनली भी करना है. आई कैन शेयर वन ऑफ दोज मोमेंट्स. हाँ श्योर. एक दफ़ा जैसे मैं बताता हूँ, एक इवेंट विच आई कैन रिकॉल इज
दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि अच्छा पॉलिटिकल वाली चीज़ का भी यही मतलब टर्न था. आई वाज इन 11th ग्रेड के एंड पे आई लेवल्स में, और वन ऑफ माई अंकल्स वो से मैं मिलने गया ओवर अ प्रोजेक्ट. कोई वर्ल्ड अफेयर्स का प्रोजेक्ट था या कोई सोशो का प्रोजेक्ट था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन इट वाज अबाउट पार्टीशन. ठीक है, और मतलब इट वो समथिंग जो आप आराम से इंटरनेट पे रिसर्च करके घर बैठ के भी कर सकते हो. लेकिन पता नहीं क्यों आई हैड दिस अर्ज कि नहीं, आई एक्चुअली वांट टू टॉक टू समवन हु हैज बीन थ्रू दिस. तो आई फाउंड एन अंकल ऑफ माइन हु वाज मेरे नाना के भाई. ठीक है, तो मैं उनके पास गया. अब यू माइट बी वंडरिंग स्टोरी कहाँ जा रही है, लेकिन इट विल लिंक. हाँ, उनके पास मैं गया और उनसे मैंने इंटरव्यू किया. एंड ही टोल्ड मी अबाउट हिज एक्सपीरियंस. ही वाज 12 जब पार्टीशन हुई थी. एंड आई न्यू यूड ऑलवेज नो कि देयर वाज वायलेंस इसमें, बट हियरिंग इट फ्रॉम समवन दैट्स लाइक अनदर डिफरेंट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो बता रहा है अपना. हाँ, तो ही वाज टेलिंग मी अबाउट ट्रिगर वार्निंग. ही वाज टेलिंग मी अबाउट कि किस तरह ही सॉ पीपल जिन कैरिंग देयर इंटेस्टिन्स जो बाहर निकली हैं बिकॉज स्लैश किया हुआ उनका स्टमक को और सब, और इस तरह की मतलब एक्सट्रीमली गोरी डिटेल्स. और माई इंटरव्यू वाज डन. मैंने सारा अपना इंटरव्यू कर लिया, मैंने अपने नोट्स रैप किए, और जब मैं उठने वाला था इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है. ही सडनली गोज, बेटा वैसे मैं एक बात बताऊँ, ये सब नहीं होना चाहिए था. एंड आई न्यू वॉट ही वॉज रेफरिंग टू, बट आई वॉन्टेड टू कन्फर्म एक दफ़ा कि वही बात कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ. मैंने कहा क्या नहीं होना चाहिए था. एंड ही गोज, इस मुल्क का बनना. एंड मतलब I was chatting for an 11th grade. For an 11th grader, you never conceive कि अच्छा ये इस तरह भी एक सोच है. ठीक है, I'm not saying क्योंकि तब तक आप पाक स्टडीज और उस एंगल से आए होते हो. national narrative is so deeply होता है कि यही है पाकिस्तान का मतलब क्या, और ये सब आप 14 अगस्त मनाओ, 23 मार्च मनाओ. I'm not saying you shouldn't, but like we're fed this one singular line. And we are led to believe कि जो 22 करोड़ सारे लोग हैं वो यही बिलीव करते हैं. वो यही बिलीव करते हैं, एक ही दुश्मन है और ये इस तरह. ठीक है, कहने का मकसद ये है कि मी बिफोर दैट इंटरव्यू एंड मी आफ्टर दैट इंटरव्यू वर नॉट द सेम पर्सन. मतलब आई चेंज्ड उसके बाद से. मतलब मैं इतना डरा हुआ था कि मैं घर जाके अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता था कि ये मेरी बात हुई है. और उसके बाद से ना आई थिंक दैट्स, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसके बाद से अच्छा आई रियलाइज कि अच्छा एक देयर इज वे, दुनिया बहुत बड़ी है मेरे से. और उसके बाद से आई डिस्कवर्ड स्टार्टेड उसी वक्त मेरा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अभी हो रहा था 11th में. एंड बाय चांस आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस मैन हु इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन. टू पीपल एक्चुअली, इमॉर्टल टेक्निक एंड लोकी यूके का इमॉर्टल टेक्निक. होपफुली पीपल इमॉर्टल टेक्निक का मुझे पता, राइट. तो दैट्स वेयर पॉलिटिक्स हैपेंड. और वो और इस तरह करके तो वो स्विच होना शुरू हो गया. Immortal Technique से मुझे एक गाना याद आता है. I'm not gonna say which one it Dance is, with but the Devil? Probably yeah. That's listening to it the first time. I've performed that song live, Lams mein, just by the way. Did people understand what you were? Yeah. Damn. That must have been an experience. Performing it live. हाँ, मतलब यूनिवर्सिटी में ना मैं हमेशा वो जानबूझ के पिक ऐसे कभी गाने जो जरा करें एकदम लोगों को हिलाएं, तो उस तरह मैं करता था. उस तरह के गाने. Nice. Yeah. So what is the art of hip hop and rapping to you? Like, what does it mean to you? Yeah, I look at it as a means through which I can convey certain ideas. और इसी तरह का, जिस तरह मैंने अपने अंकल की बात की, इस तरह के ideas. I look at it as a means जिसके through when people, जब उसको लोग सुने तो they can have वो मुश्किल conversations आपस में जो usually लोग नहीं करते. तो it's almost like a means. End of the day, the first thing I view myself as is firstly a student of history. ठीक है, before anything else I consider myself a student of history. Secondly as a performer. उसके बाद as a rapper. ठीक है. Okay. Yep. Rap is just a means through which I can get my word across. ठीक है. मुझे जो असल शौक है ना वो परफॉर्मेंस का है, परफॉर्म करने का. फॉर इंस्टेंस मुझे जो स्टेज की आदत डली थी एक्चुअली वो म्यूजिक के थ्रू नहीं डली थी, वो थिएटर के थ्रू डली थी. स्कूल में जैसे मैं जब स्कूल में था तो बाय चांस मेरी जो वाइस प्रिंसिपल थी वो, उनको बहुत शौक था क्लासिकल उर्दू लिटरेचर का, तो वो बहुत इंकरेज करती थी बच्चों को. तो व्हेन आई वाज 9th grade आई वाज परफॉर्मिंग मंटो अफसाने ऑन स्टेज, और फिर हबीब जालिब के ऊपर भी हमने किया, अमीर खुसरो पे हमने प्ले किया. तो उसके थ्रू मेरे उर्दू का भी शौक जो है ना वो बेहतर बढ़ता गया और स्टेज की भी आदत डली. एंड फॉर सम रीज़न मी ऑफ स्टेज एंड मी ऑन स्टेज वर टू कम्प्लीटली एकदम से डिफरेंट पीपल. और बहुत लोग ये पॉइंट करते हैं कि तुम्हें स्टेज पे जाके एकदम से क्या होता है, मतलब इतना. तो मुझे जो शौक है ना परफॉर्मेंस का वो वहाँ से डला था, स्टेज का. परफॉर्म करना इज़ माई
calling. Calling, हाँ. अब rap by chance is the medium through which. Yeah. Because rap is the mixture of the two, na. It's a weird message plus performance. Right. That is where teaching comes in as well. Yeah, I want to talk about that actually. But first, let's start with the history. I think you mentioned that. So why history? Why did you choose that as a subject? I chose history. Acha, every decision I've ever taken since when I had this realization कि मुझे political rap music करना है ना A levels में, तब से almost every major जिंदगी का decision I've taken has revolved around it. सही है. ठीक है. तो university में I decided to pursue political science and history because I knew कि मैं जिस तरह का म्यूज़िक कर रहा हूँ उसमें मुझे सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट ये डिग्री ये चीज़ करेगी. और मैंने बहुत शौक से पढ़ा. और मतलब some of the most inspirational people I've had in my life जिनकी वजह से मतलब मेरी जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे डेवलप किया वो मेरे प्रोफेसर्स थे. अभी तक मेरे बहुत करीब हैं. और उनकी वैलिडेशन जितने लिए मेरा मायने रखती थी ना कुछ नहीं लगती थी. इनफैक्ट by the end of my university I submitted a mixtape as one of my final projects for a course called decolonization. और everyone submitted essays और इस तरह की चीज़ें. मैंने कहा नहीं मैं एक rap mixtape करूँगा. मेरे प्रोफेसर was kind enough, Dr. Ali Raza by the way. Oh yeah. He was kind enough to give me that chance and he was like करो. और end पे मतलब awesome. Yep, end पे it got archived Lum's library में. So can people like check it out? I don't know. मैं private किया हुआ है अभी link. लेकिन वो it's out, it's there, it's there, it is out there, it is stored there. That's awesome. He has it अपने office में भी and everything. So how wow, that's I never people don't know this. ये मैं पहली बार इधर आ रहा हूँ. That's amazing यार, because उनके लिए भी यार काफी interesting experience होगा listening to a mixtape and then grading it. Yeah. और उनकी validation जितना वो मायने रखती. This sounds strange but these were the people I look up to, the professors और ये लोग. मुझे हमेशा उनकी validation सबसे ज़्यादा मायने रखती. Because it's all about ideas and messages for you, right? So they're the people that help facilitate that. Nurtured me, literally nurtured me. Yeah, and now you're on the other side as well. You're teaching. And you're imparting those ideas. So how have you translated all the stuff that you learned through, I'm sure obviously in the classroom and outside it, into like teaching? What do you think attracts you about that whole thing? What attracts me about that is, for me it's one and the same thing. It's literally the same thing. The professors who I looked up to, they weren't instructors मेरे लिए. They were always performers. और ये उनकी सबसे बड़ी ख़ास बात थी. जो मेरे सबसे करीबी प्रोफेसर्स रहे हैं, they had this way to grip the class emotionally. और मतलब वो ऐसे होता था जैसे लिटरली आप थिएटर देख रहे हो. कहने का मेरा मकसद है, me being on stage and me being in a classroom, it gives me the same sense of fulfillment. This might sound strange, लेकिन मेरे लिए when I'm lecturing, जब मैं history या world affairs पढ़ा रहा होता हूँ, तो मुझे वो same sense of fulfillment मेरी होती है. I approach it as a performance as well. ठीक है कि उसका एक सर्टन नैरेटिव होता है, प्लॉट ट्विस्ट होता है, उसमें ये होता है सब कुछ. तो इसलिए टीचिंग हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माय पैशंस म्यूजिक के साथ. Right, it's yeah, that's actually an interesting point because उसके अंदर भी आगे लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं. It's kind of a stage. Exactly. You're there to captivate them and keep their attention. And in your case, I think the two are especially similar because both of them are based on you getting your ideas across in a way. I think that's what you do with rap as well. So and also I want to give those students the opportunity जो मुझे नहीं मिली थी जब मैं उनके जितना था. हमारे टाइम पे नहीं होता था यार. मैं सोचो जब हमारे टाइम पे पाक स्टडीज वगैरह पढ़ा. हाँ वो क्या किसकी किताब थी यार, वो जो एक नाइजल के लिए यार गोरे ने किताब लिखी है. मेरे कहने का मकसद है इट वाज लिटरली रीड करो रट्टा और ठा. हाँ, Jinas 14 points. The अच्छी बात about the school I teach in at is the administration is very progressive. And they've given me this leeway कि मैं बाहर के वो include कर सकूँ. Really? Narratives इधर उधर. I can challenge the book etc. अभी मेरी जो next class Tuesday को हो रही है उसमें मैं टोबा टेक्सिंग पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, जिसका कोई लिंक नहीं है नाइजल के लिए से, you know. ठीक है. लेकिन स्कूल ने मुझे लीवे दिया कि चैलेंज तुम्हें, उन्होंने मुझे लिटरली रखा ही इसलिए कि ताकि मैं नैरेटिव को चैलेंज करूं जो स्टेट वाला. बिकॉज आई मीन एंड आई थिंक दिस होल्ड्स अक्रॉस द बोर्ड. आई थिंक आजकल आप यू कैन टिल्ट टू एक्सट्रीम्स इन बोथ केसेस के और बोथ साइड्स एक्चुअली, कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कांट हैपन फॉर मी एटलीस्ट अनलेस, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, अगर आप उन्हें
आप कोई भी जब चीज़ बताते तो उसकी अपोजिंग साइड या उसकी दूसरी 100% फ्लिप साइड बताओ, बिकॉज अ लॉट, एंड बबल वाली बात was so apt in this sense because people grow up to be like 25 and 30 and think there's only one way to view the world. Exactly. इस मुल्क का जो मैं बहुत I'm generalizing, लेकिन no one would disagree with this. इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला is intolerance. ठीक है, और सिर्फ इस मुल्क का नहीं, मुझे अब तो ग्लोबली हो गया. Politics for instance is so polarized, जहाँ भी देखो आप, ठीक है, just because you belong to a certain camp you're automatically everything जो आपके मुंह से निकलता है वो बकवास है. ठीक है, exactly. और कैंप वाले भी इंटॉलरेंट हो गए, you either with us or against us. PTI PMLN, मतलब PTI भी लेफ्ट राइट की भी आप अगर बात कर लो, अगर आपने थोड़ी सी नुआंस तो has left the chat, gone. लिबरल कंजर्वेटिव जो भी, बस. तो कहने का मकसद ये, मेरा जिस चीज़ ने दिमाग खोला था वो इंसिडेंट, जिस तरह दैट वाज वन ऑफ द इंसिडेंट्स. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि व्हेन आई एम डीलिंग विद स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट एक चीज़ जो उनको कन्वे होगी ना डिफरेंट आइडिया से, वो दिस सेंस ऑफ इंक्लूसिविटी जो कि इतनी मिसिंग है इस मुल्क में. तो मुझे उस बात की बहुत फुलफिलमेंट होती है कि इनको इस अर्ली एज पे एटलीस्ट इनका बबल वो बर्स्ट हो रहा है, जो मेरा इतना लेट जाके हुआ था. इतना लेट नहीं हुआ था, लेकिन I understand. And I think I was very lucky. You're an exception. हमें तो, and I think and it was also because of like certain universities जो हम जब गए थे, उसके अंदर the Pak Studies course was designed in a way in which you challenge the वो, तब जाके लोगों की काफ़ी आंखें खुलती हैं. Even पहले से वो वही नाइजल केली वगैरह पढ़ते हुए आ रहे होते हैं. So I think it's a great service you're doing because I hope कि सारी universities में अभी it's only restricted to LUMS unfortunately. And obviously we know why it's not. Yeah, exactly. Yeah, so but it's a great service you're doing because I think the kids you're teaching will have an edge, hopefully, in terms of, you know, when they go out there or when you interact with other people, so they'll have much more to think about and say than a lot of the usual students जो उसमें होते हैं. What are your thoughts on the current hip hop rap game in Pakistan? Like, we've got a lot of people up and coming, a lot of people who are established now, like youngsters वगैरह. What do you think about the rap game in Pakistan? I look at hip hop जो यहाँ का है ना, I look at it in terms of South Asia overall. ठीक है, तो is it fine if मैं हाँ sure. मुझे खैर मैं नहीं पता बाकी साउथ एशिया का, मुझे पाकिस्तान के पता है. हाँ, because almost एक ही टाइम पे हुआ है ना, इंडिया में भी, बांग्लादेश और यहाँ पे. और हाँ, तो मतलब one thing positive which I would like to mention इधर, which I don't know क्यों ज़्यादा लोग इस चीज़ को मेंशन नहीं करते, लेकिन वन थिंग विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हिप हॉप इमर्जिंग साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया, कि नो अदर जॉनर हैज़ ब्रोकन दिस क्लास बैरियर सो क्विकली. क्योंकि देखो बहुत से जॉनर्स ये फॉरेन है, मेटल बैंड्स हैव बीन अराउंड सिंस ईयर्स यहाँ पे, लेकिन लुक हाउ क्विकली हिप हॉप हैज़ ब्रोकन दैट बैरियर. और बाकी जॉनर्स एक ही क्लास तक रहते थे, लेकिन हिप हॉप इतनी क्विकली फैला है बाकी मैसेज तक भी. तो ये चीज़ मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स कॉस्ट इफेक्टिव. ठीक है, उसमें इतनी चीज़ें कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते जैसे बाकी जॉनर्स में होते हैं. मेरे लिए भी खुड्डे लाइन और ये सारे गाने जो बने थे, लिटरली दे आर स्टिल टू दिस डे मेरे गाने आर मेड इन माई बेडरूम ऑन अ लैपटॉप, नो मिडी, घटिया सा सेटअप. तो कहने का मकसद ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इधर हिप हॉप में, कि इसने बहुत जल्दी क्लास बैरियर तोड़ा. उसके अलावा आई डोंट फॉलो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी साउथ एशियन हिप हॉप, और इसकी सबसे बड़ा वजह ऑब्वियसली ये है, मुझे हमेशा से ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम ऑन द आउटसाइड लुकिंग इन, ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम ऑन अलग से एक आइलैंड, क्योंकि पोलिटिकल म्यूजिक इज it is isolating इधर इस गेम में. यू मतलब दैट्स नॉट व्हाट मेन स्ट्रीम में जिन चीज़ों की बात करती हैं. लेकिन आई डू हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आई लव डियरली. सनी खान दुरानी इज वन ऑफ दोज, मानू, उसके अलावा Manu's been on the podcast twice. Yeah, I saw मानू का इधर जो हुआ था, जैन वो जैन. उसके अलावा फारिश शफी आई रियली रिस्पेक्ट. इंडिया में रफ्तार, डिवाइन, तो these guys. हाँ, अच्छा, I don't know obviously about रफ्तार and डिवाइन. अब मैं पाकिस्तान में महदूद हूँ, but yeah, I think absolutely spot on in the sense कि हिप हॉप और उस मुझे आर्ट फॉर्म से याद आया क्लास बाउंड्रीज जो टूटती हैं. For me it's so, I think hip hop is so underrated as an art form because it's been largely dismissed by a lot of sectors of not our people our age but generally बड़े लोग और इस तरह के, because हाँ, thug music, because वो Ben Shapiro वाला take thug is not like
यार क्या बोले बंदा उसे, लेकिन लाइक थग म्यूजिक और इस तरह की चीज़ें कि बड़ा अपना माचो फुल वो कर रहे हो, हाँ गुंडागर्दी, बट लाइक यार ऑनेस्टली आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो जॉनराज हैं in all of music history that have a founding, like have a starting date. एक metal है और एक hip hop है. metal की I think was the first album Black Sabbath की, और hip hop की मैं भूल गया हूँ. Yes, in a party he played. And that, so ये दो वो हैं. And I just love so much about hip hop in the sense कि यार it has so many layers to it, and you would notice better than me. You've got the writing, which is I think the writing process and rhyming is literally an art form that some जो लोग इसमें अच्छे होते हैं ना, they're geniuses. मतलब the great rappers or great lyricists of the time, they're geniuses. Like उनके IQ point probably पता नहीं किधर होंगे. I called this years ago कि ultimately hip hop will be it. I've always seen it as modern age poetry, और मैं उसमें भी एक तरह बात करना चाहता हूँ because a lot of people don't know this, जो मैं यहाँ share करना चाहता हूँ, how close it is related to poetry, and I called this years ago कि ultimately these will be the people you teach in literature at some point, और वो हो चुका है. मतलब Kendrick Lamar getting the Pulitzer Prize, being taught in Harvard etc. और ये सब, मतलब what an album, To Pimp a Butterfly. Yeah, To Pimp a Butterfly और वो सब, मतलब you're now teaching these things. The personal experience, the fact that my mixtape was inducted into the library और awesome. हाँ, तो these are your modern day poets. Yeah, of course, because और lyricism के अलावा फिर तो पूरी sampling और वो सारा एक पूरी एक tradition चल रहा है. I think people don't understand how many layers there are to hip hop and how कितने different forms of hip hop और वो रह चुके हैं. मतलब exactly. There are so many varieties to it. और पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, I think like the names you've taken, अब एकदम से boom आ रहा है in this, and obviously I think मेरे ख्याल से मुझे जो favorite अभी लगते हैं वो, this is a pretty mainstream take. Youngsters I think are up there right now. I mean some of, I think वो जिस भी played a very pivotal role. Yeah, I think और वो काफ़ी देर से लगे हुए हैं. वो उनका कौन सा गाना बर्गर कराची काफ़ी फेमस हुआ था वो, I think काफ़ी, और उनका गाना जो लगा रहे है, that's about this struggle that they've I sort of paved the way for a lot of people in the rap game in Pakistan. और generally म्यूजिक इंडस्ट्री का भी यही सीन है, वुडंट यू से? पाकिस्तान में जो स्पॉटिफाई आया है और अब स्ट्रीमिंग स्टूडियो और ये सब, आई थिंक बूम पे काफ़ी आगे निकल गया. या व्हेन वंस ब्रांड स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड और इस तरह, तो एकदम हर चीज़ एकदम से इट बिकम्स कॉमन. दैट्स क्लासिक कैपिटलिज्म. मतलब लेकिन हाँ, गली बॉय ने आई थिंक बहुत रोल प्ले किया था. लोगों को शायद इशू उस बात से मेरे कहने से, लेकिन गली बॉय डेड इशू क्यों नहीं, लेकिन समझ लाइक ओ बॉलीवुड फिल्म उस तरह. ब्रो आई हैव बीन सेंसर्ड बहुत दफा इन चीज़ों पे. कभी मैं इंडियन कोई भी चीज़ मेंशन कर दूँ ना तो सेंसर्ड. या ब्रो किधर सेंसर्ड फ्रॉम वेयर, लाइक क्या टीवी स्टेशंस और अच्छा खुड्डे लाइन. अब ये एक और एक टॉपिक है. ब्रो गो ऑन. आई परफॉर्म्ड खुड्डे लाइन, इसलिए हम YouTube पे had an interview at PTV. My first interview ever was at PTV, and मैंने कहा come on, मतलब PTV. हाँ, मैं गया और मैंने इंटरव्यू हुआ मेरा, और मुझे बोला गया कि खुड्डे लाइन आप करें आपका गाना. मैंने कहा ठीक है. मैंने खुड्डे लाइन किया परफॉर्म, एंड थोड़ी देर बाद प्रोड्यूसर चलता आता है कि कोई और गाना कर सकते हैं आप. एंड उसके वक्त दी ओनली अदर सॉन्ग आई हैड वाज देखेंगे. मैंने कहा आप सोच लें, मैंने अगर दूसरा गाना किया ना फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा. एग्जैक्टली. तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा नहीं, विल फिगर समथिंग आउट. आई वाज फ्यूरियस और मैंने थोड़ा सा रैंट किया. मैंने कहा दुनिया भर की आप वही यार चीज़ चला दोगे सब कुछ, लेकिन जैसे कोई पॉलिटिकल बात करेगा ना, चुप. ठीक है. तो जब वो अल्टीमेटली एयर वॉन्टर हो तो खुड्डे लाइन आधा कटा हुआ ठक ठक नाप तो ठक कटता है फिर इस तरह. देर लाइक उसमें आर्मी की बात है, ये बात है, वो बात है. देर जस्ट टू ऑन रिकॉर्ड, जिन्होंने नहीं सुना, दैट सॉन्ग डजंट हैव अ सिंगल गाली. ठीक है. हाँ, मतलब मैं वही मैंने कहा सेंसर क्यों होगा, कोई गाली शाली कुछ नहीं उसके अंदर. ऑब्वियसली मुझे आई डोंट नो पीटीवी शीटीवी इन्वॉल्वड, दैट सेज अ लॉट. बट आई मीन सम पीपल इवन हैव इशू. यॉर्कर है मैं, आई हैव दिस लाइन वेयर आई से तू लगान, मैं लगान वाला भुवन और तू भुवन बाम है. देयर लाइक ओ लगान रेफरेंस इंडिया, इस तरह करके उसका भी इशू हुआ था एक टाइम पे. तो काफ़ी वियर्ड इशू. मतलब दिस जस्ट गोज टू शो के व्हाट वी आर डीलिंग विद, किस वेवलेंथ पे बात चल रही है इधर, किस लेवल का हिसाब किताब है. व्हाट दोनों साइड्स पे पॉप कल्चर सेम है. लिटरली मीम्स इज द बिगेस्ट प्रूफ. Yeah. जो वहाँ पे फनी है
यहाँ पे फनी है, मतलब पॉप कल्चर बहुत इट्स ओवरलैप्स इतना ज़्यादा दोनों साइड्स पे यार, लोगों का ओवरलैप इतना लोगों ज़्यादा का है। ओवरलैप, हिस्ट्री का ओवरलैप, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि व्हेनेवर मेरे इतने जो दोस्त बाहर गए हैं, यूएस, कनाडा, यूके, इंडियन से दोस्ती होती है, इंडियन और पाकिस्तानी, देयर लाइक, अगर पाकिस्तानी नहीं है तो इंडियन पाकिस्तानी आर ऑलवेज लाइक देयर टुगेदर। आई मीन वही बात थी वो अंकल के ये नहीं होना चाहिए था। इमेजिन इफ द म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉर्डर्स थोड़ा सा ईज अप, इमेजिन द बूम जो इंडस्ट्री में आएगा म्यूजिक, बस सोचो। हाँ, it would be crazy. I think we've the only glimpse we've had of Pakistan, India I wouldn't even say competing, but being on the same in terms of some sort of form is cricket. हमने और हमारी जनरेशन ने भी वो पूरी तरह नहीं देखा क्योंकि हमारे टाइम में वो बंद हो गया था, बट लाइक पीपल हु ग्रू अप इन द 90s शारजा कप जिन्होंने देखा है, एंड कोक स्टूडियो एज़ वेल। यस, कोक स्टूडियो के कमेंट्स में सब दोस्त होते हैं। हाँ, ये वही मैं कहने लगा था, लाइक इंडिया पाकिस्तान का इतना ओवरलैप है, बट बस जिंगोइज्म और पेट्रियटिज्म कम्स इन बिटवीन, और या दैट्स द प्रॉब्लम। बाकी खैर क्या ही कर सकते हैं। कोक स्टूडियो, शाउट आउट टू जुल्फी एंड कोक स्टूडियो, मैन। आई थिंक they're doing a fantastic job of bringing through a lot of people jo underground. I'm so happy for Eva B. I've known Eva B since the past 3-4 years. She's one of the only rappers I actually follow. और सब हम एक टाइम पे गाना भी कर रहे थे साथ। थोड़ी अपने आप को वो करने वाली, मैंने ईवा बी को पता नहीं कब से मैसेज किया हुआ था। शुरू में आई थिंक आई हैड समवन ऑन, pretty interesting guy actually, one of the best, my favorite podcast, कराची यूनाइटेड के गोलकीपर है दानियाल नईम, who's also a rapper in Liari underground. अच्छा, सही है। तो he had a lot of stories about Liari and rap and everything. Great guy. तो he told me about, I think Eva B की कोई हुई थी, और मैंने कहा यार ये भी है, तो that was वही class boundaries और वो सब कुछ Liari and everything. It was like a very big breakthrough moment for me. I was really glad. I can put Eva B की bars against any male rapper, anyone. Her bars are better than बाकी जितने भी हमारे mainstream boys हैं। Like then the concept, man, it's just so, I don't know, it's so interesting के to see something like that in our society, in our culture. तो I mean obviously hats off to her and everyone else. Karakoram making it वहाँ पे यार, the guys from Takatak, the Rame Bayan, Asfar, yeah. I'm so happy for them. Karakoram is one of the best live acts वैसे मैंने देखा है, तो shout out to Karakoram. उनका तो मैं proper बयान, Karakoram, both they're my favorite bands currently. Nice. I think अभी मानू का गाना भी आना है, I think नहीं मानू नहीं है वो, I think हसन रहीम या किसी का गाना है next. Hassan Rahim is also on the lineup. Yeah, Hassan Rahim and couple others are on the way. बाकी I think 2-3 निकले हैं। बलोची गाना यार, that was a big breakthrough moment as well. Okay, back to you, because I want to understand this, and a lot of people I think would have this question generally of rap music. Let's say you want to write a song, or is that the wrong way to approach it? Do you want to write a song, or does a song come to you? Or how do you write a song more? Like बैठे you do think of something, like is it a conscious process के? It's not. मतलब it doesn't start as a song कभी भी. I can share an anecdote यहाँ पे. खुड्डे लाइन मेरा पहला उर्दू रैप सॉन्ग था, बाय द वे। A lot of people forget कि खुड्डे लाइन was my debut उर्दू रैप सॉन्ग। ठीक है, when I performed LMM पे, the lineup पे, जो मैं the only song I had out was खुड्डे लाइन। तो मैं खुड्डे लाइन से एक anecdote उससे related शेयर करना चाहता हूँ। इस तरह होता है कभी-कभी, it sometimes starts with a phrase। अब हुआ ये, जैसे खुड्डे लाइन कैसे बना, उससे पहले मैं हमेशा इंग्लिश रैप करता हुआ रहा था, तो उर्दू में I switched in my 3rd year in uni। तो I was taking this philosophy class, सुबह 8 बजे होती थी, सीनियर ईयर में था, बल्कि मैं 4th year। I was taking this philosophy class, सीनियर ईयर में 8 AM क्लास लेना ना, डेडिकेशन। मैंने पूरे 4 साल एक भी 8 AM क्लास नहीं ली। I used to make sure philosophy art। खैर, the professor, मतलब बहुत, he was a double PhD, ठीक है, बहुत कम एलम्स में double PhD। तो मैं उनकी क्लास ले रहा था, और 8 बजे, और मेरी अटेंडेंस वाज लाइक 40% टाइम, मैं उसमें ज़्यादा जाता नहीं था। बाय चांस उठ के मैं एक दिन अपना मुंह ले गया क्लास में, और मैं ना लैपटॉप सामने रखा है, वो बात कर रहे हैं, और मैं बस आई एम अनदर किसी दुनिया में। और
बहुत कम ऐसे होता था, लेकिन मेरा इतना दिल नहीं था इस क्लास में, कभी ऐसे होता नहीं था, लेकिन इस क्लास में इतना दिल नहीं था। तो अब ये इंस्ट्रक्टर या पंजाबी में बात करते थे या इंग्लिश में बात करते थे। ही वाज बोर्न इन, मतलब सारी जिंदगी कनाडा होते हैं ना जो बाहरी होते हैं। I think Basu Kaushal used to do the same. I'm literally talking about him. मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन हाँ, तो दिस वाज बासित कौशल। We're not going to say anything bad about him. नहीं, दिस वाज बासित कौशल की क्लास ही। तो वो लेक्चर दे रहे हैं, ही गोज लाइक एंड दिस पर्टिकुलर आइडिया खुड्डे लाइंस द अदर, और मैं ऐसे बैठा हूँ और एकदम सामने क्या लव्स था। मेरे का कुछ था, मैंने नोट्स में ना लिटरली, मेरे अभी भी वो वर्ड डॉक पढ़ा, उसमें मैंने लिखा खुड्डे लाइन, दैट्स इट, मैंने बस इतना लिखा। आई वेंट होम, मैं खुड्डे लाइन कर खुड्डे, आई जस्ट स्टार्टेड इस तरह, एंड देन आई फाउंड द बीट, टन 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 केम टुगेदर। आधे घंटे में आई रोट द सॉन्ग एंड दिस हैपेंड। तो कहने का मकसद ये है, कभी कभी होता है इट स्टार्ट्स विद अ फ्रेज, कभी कभी होता है आई हैव अ कलेक्शन ऑफ पंच लाइन्स लिखी हुई। मैं चलते फिरते ना कभी कभी पंच लाइन लिखता रहता हूँ, कभी कुछ हो जाता है और पंच लाइन, आई मेक अ पंच लाइन ऑन स्पॉट, और आई राइट उल्टा कभी, तो जैसे ठीक है, आई राइट द पंच लाइन एंड देन मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, और इसलिए उससे फायदा ये होता है कि द पंच लाइन हिट्स हार्डर बिकॉज आई नो वेयर इट्स गोइंग, आई कैन बेस एवरीथिंग। तो जो गानों में जो एक सिंगुलर वो चल भी रहा होता है ना नैरेटिव, वो बहुत कंसिस्टेंट होता है यूजुअली, तो बहुत उस पर टाइम लगा होता है। कभी कभी आई स्टार्ट विद द वीडियो एंड देन द सॉन्ग इज द साउंड ट्रैक टू द वीडियो। तो सब माया फॉर इंस्टेंस, आई न्यू कि मुझे वीडियो करनी है जिसमें पॉलिटिशियंस हैं और मास्क पहने में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और टग ऑफ वॉर चल, because I wanted to talk about that because videos are a big feature in your music. It feels like you are very meticulous, very particular about them, and you work on them in great detail, because काफ़ी आजकल जो ये होता है ना, पहले बंदे ने अपने गाने निकाले, मोस्टली होता है आपने एल्बम निकाल दी, फिर अपना वीडियोस, ये भी वीडियो निकाल रहा हूँ, अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। फॉर यू इट्स seems like the video is a package, it's a full package. It's very important, it's very central. Again performer वाली बात आती है, तो पैकेज वाली बात, I want to have, जो भी सुन रहे हैं ना उसको, I want them to give a पूरा experience, audio, visual, everything, live सबसे important. That's my fourth technique. Every song is written for the live show. अच्छा, ultimately मैं हमेशा गाने लिखते हुए मेरे माइंड में होता है कि दो चीज़ें होती हैं, firstly this needs to hit live, बिकॉज मैंने बताया अल्टीमेट शौक मुझे परफॉर्म करने का, दिस नीड्स टू हिट लाइव, एंड वो नज़र मतलब आता है क्राउड, मतलब समटाइम्स आई टर्न द माइक टुवर्ड्स द क्राउड, और वो पंच लाइन उसी वक्त बोलते हैं, तो मैंने पॉकेट्स रखी होती हैं गाने में, मुझे पता होता है ये क्राउड के लिए लाइन है, या ये कोरस इस तरह क्राउड के लिए लिखा हुआ है। और सेकेंडली द बार्स नीड टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। अगर मैं म्यूजिक निकाल भी दूँ ना, तो द बार्स शुड बी हार्ड, पंची इनफ कि वो फिर भी हिट करें। So it is like poetry in that sense. I have a background उसमें, I was a slam poet as well. तो वो एक अलग स्टोरी अगर उसमें जाना है। Take it away, man. यार can you please explain what slam poetry is? Slam poetry is like गोरों का मुशायरा। गोरों का it's मुशायरा, it's मुशायरा होता है, लेकिन it's a foreign, slam poetry is a foreign concept. मुशायरे तो यहाँ तो मतलब चलते ही आ रहे हैं। तो होता ये था कि यूनिवर्सिटी में ना, मैं इंग्लिश जब लिख रहा था, मैं इंग्लिश रैप करता था, तो स्लैम पोएट्री इवेंट्स होते थे, मैं एक दफ़ा एक में चला गया, और वहाँ पे प्रॉपर सीजनड शायर आए होते थे, दास्तान लेके अपनी, मतलब दास्तान जो पूरी कलेक्शन होती है, और उसमें से दे वुड रीड, और मैं नालायक बीच में घुस के अपनी इंग्लिश बार्स बीच में डालता था। लेकिन होना क्या शुरू हुआ, पीपल स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू माई रैप बार्स, और उसमें उसमें लोग तालियां नहीं बजाते, इस तरह नहीं करते लोग, उस तरह कर। हाँ यार, आज से मैं ये करूंगा। हाँ, जब कोई अच्छी लाइन आती है ना, काम की चीज की ना, तो मैंने आई वेंट टू दिस इवेंट, इट वाज सम चैंपियनशिप या कुछ, और मैं वैसे चला गया, आई एडवांस्ड आगे, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, नेशनल फाइनल्स, मेरे को, और बस होता जा रहा है, आई रैन आउट ऑफ मटेरियल में, मतलब नेशनल फाइनल्स आ गया, आई डिडंट विन फाइनल्स में जाके, आई थिंक 4-5 लोगों में था, लेकिन I figured this one thing out. I realized कि if my bars are punchy enough, if they hit hard enough, बगैर म्यूजिक के, तो म्यूजिक के साथ क्या होगा ब्रो? Yeah. तो तब से मेरी वो भी एक टेक्निक बन गई। So the bars come first for you? Almost always? Or the bar, नहीं, मैंने बताया sometimes the video comes वो उस तरह, लेकिन नहीं, मतलब between the music and the music follows the bar. The lyrics need to stand up for themselves. I should be able to perform अपने गाने without a beat, without music, और मैं जब करूँ तो उसका इतना ही impact होना चाहिए। तो Makes sense. That's really interesting. और
What about the music itself? Like, obviously, I saw that you produced your own songs as well. So, production process, did you like, was that a learning curve for you? वो कब से शुरू किया? मैं वो पहले खुड्डे लाइन से ही चल रहा है. नहीं खुड्डे लाइन एक्चुअली बहुत रिसेंट है. खुड्डे लाइन तो आया अभी 2019 में. या प्रोडक्शन में ए लेवल से कर रहा हूँ. मैं इंग्लिश रैप, I've rapped in English way longer than I've rapped in Urdu. मेरी एक मिक्सटेप भी है इंग्लिश में. इफ यू स्क्रॉल डाउन यूट्यूब पे यू विल सी बियॉन्ड. हाँ, उस पर सनी खान दुरानी है. वहाँ से मेरी उससे भी दोस्ती हुई थी. और अगेन पॉलिटिकल, लेकिन इट्स इंग्लिश एंड इट आई साउंड लाइक इमॉर्टल टेक्निक, मतलब फुल वो वाला. बहुत इंस्पायर्ड. समथिंग बैड टू साउंड लाइक, यू नो. नहीं, कहने का मकसद है आई लिटरली फुल ऑन साउंडेड लाइक इमॉर्टल टेक्निक. और मैं किस तरह उर्दू में गया वो एक अलग कहानी है, अलग. वो भी एक बबल बर्स्ट मोमेंट था. लेकिन हाँ, मैं इंग्लिश में करता था. और प्रोडक्शन मैंने ए लेवल्स में शुरू की थी. एंड उसमें मेरे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसेस वाज, यार आई FL स्टूडियो आई यूज़. और कानिये इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट इन्फ्लुएंसेस उसमें. और द आर्ट ऑफ सैम्पलिंग ऑब्वियसली वो किंग है उसका. तो मतलब इस तरह. और वन ऑफ द फर्स्ट बीट्स आई एवर मेड प्रॉपरली और सैम्पल मैंने जो किया था वो चढ़ा लो था. अच्छा. और वो जब व्हेन इट वर्कड आउट तो मैंने कहा अच्छा नहीं, अच्छा और मैंने टाइम दिया. तो मतलब ए लेवल से मैं कर रहा हूँ प्रोडक्शन. यार मुझे I was very lucky कि I started early. And बाकी rappers, if any rapper is watching this, I would really advise you कि तुम्हें know-how होनी चाहिए production की. For sure. I think पाकिस्तान में apart from, you know, ऊपर से hip hop और artists काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं. But मुझे जो एक चीज़ surprise की थी ना pleasantly, जब मैं घुसा था पाकिस्तान और मैंने actually ज़्यादा explore किया था in like recent years, is the level of production is so good. I didn't expect it for whatever reason. Like, यार अब obviously Hassan Rahim is getting to be a household name right now, but his production by Abdullah Kasumbi, I think that's how you pronounce his name. Apologies if I'm getting it wrong. But his production is immaculate. और फिर youngsters का जो producer है झोके, I think. I mean these guys are, and obviously Talal Qureshi, shout out. I have to shout out my producer जिसके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ. उसका मैं नाम लूँगा. I love the guy. हाँ sure. Shaheen. He is the one who made Paiyyah की beat by the way. Oh, so nice. I'm working with him, new music उसके साथ. So much talent out there, man. Just like you said. He lives in Lala Musa. अच्छा. मुझे पता भी नहीं लाला मूसा का है. मतलब लाहौर. हाँ मतलब मैंने उसको रिदम फेस्ट पे इनवाइट किया, which is my biggest show अभी तक. रिदम फेस्ट इतना बड़ा क्राउड मैंने कभी नहीं हिट किया था. और मैंने उसको बोला ब्रो आ जाना. एंड शो वाले दिन ही इज लाइक ब्रो 2 घंटे में पहुंचूंगा मैं, तो क्या सीन है. बिकॉज मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे और इस तरह से व्हाट्सएप पे बातचीत. अच्छा. नाइस. तो खैर कहने का मकसद है कि इवन इन शहरों में मतलब इट्स बिकमिंग पॉपुलर और वो सब. तो looking forward to working with him more. और अभी और गाने हैं in the works उसके साथ. Yeah, I mean काफ़ी, I mean the only way is up for Pakistan music right now. I think it's going to go to one whole other level, because वही है ना, like it's so, I won't say easy, but like it's accessibility बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा, I think, and that's why people are getting into it more and more. I want to get into a bit of the serious stuff, as if you weren't talking about it already, but like you've written yourself your music is based on the literature that you consume. Yeah. What kind of literature? And yeah. यार मुझे reading has been one of my main hobbies since uni में आके आदत डली थी. When you're a history political science major तो मतलब academic papers और ये सब reading तो होती है, और सारा research ही इसी तरह होता है. उसकी दिहाड़ी आपकी reading पे लगती है मेरे. सारा game ही सारी reading का है. One of the biggest reasons why people fear humanities courses लेना और ये चीज़ें, because reading बहुत है. लेकिन मुझे ना आदत डल गई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था. तो तब से यूनिवर्सिटी ऑनवर्ड्स मुझे हमेशा से शौक है रीडिंग का. कभी कभी होता ये था कि वीकेंड आता था यूनिवर्सिटी के दौरान और आई गो टू द लाइब्रेरी फ्राइडे को, आई बोरो लाइक 6 बुक्स एंड पूरा थद्दा लेके मैं जा रहा होता था. एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम मतलब शायरी से लेके गांधी का हिंद स्वराज, सब कुछ इस तरह, लोकल लिटरेचर, फिडेल कैस्ट्रो के क्यूबन रेवोल्यूशन, सब कुछ मिक्स पूरा. और वो मैं जाता था और बाय संडे मेरी कोशिश होती कि मैं जितना इसमें से स्किम कर सकता हूँ पढूं. कभी क्योंकि आपको ना तेज़ रीड करने की बहुत आदत डल जाती है. कहने का मकसद है किताबें उसके बाद ख़रीदना, जमा करना. मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है अपने बेडरूम के अंदर. तो राइटिंग अ सॉन्ग, कहने मैं इस पे आ रहा हूँ कि इज़ ऑलमोस्ट लाइक राइटिंग अ रिसर्च पेपर मेरे लिए. इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस. तो वो मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभी ये होता है कि द पंच लाइन कम्स फ्रॉम द लिटरेचर. जैसे खुड्डे लाइन में लाइन है, पढ़ा नहीं संजू पर रहते आर्ट ऑफ वॉर. हाँ, मैंने एक्चुअली वो सिंगल आउट किया था. So I wanted to ask you about that. Sun Tzu's Art of War was right in front of me जो मैंने वो लाइन लिखी थी.
I was reading Yeah, something. yeah. तो कभी a lot of what I'm reading shapes what I'm writing. तो इसलिए. Right. That's awesome, yeah. I think there are a lot of political and social messages there. But before that, what can you, if you were to, name a few books or pieces of literature that have shaped your like life in a way, because I mean thinking और वो सारा कुछ involved उसके अंदर होता है. यार I have to सबसे पहले currently which I recently was reading इसका कोई इशू हो रहा है ना. अच्छा सबसे पहले तो I have to name a local legend अमार अली जान की किताब है रूल बाय फियर recently came out literally last month. Please go support अमार अली जान की किताब मतलब it's actually plan to have him on soon. I've got it literally अगले दिन जब हुआ ये it's 8 thesis on authoritarianism in Pakistan. तो trace करती है कि किस तरह state control has grown over time and not the state only military overall. उसके अलावा अगर non local literature की बात करूँ Wages of Rebellion by Chris Hedges उसने मुझे बहुत शेप किया था. मेरा एक इंग्लिश सॉन्ग था रेबल वो लिटरली मैंने वहाँ से इंस्पायर्ड है. इट इज़ एन अकाउंट ऑफ मतलब उसमें एडवर्ड स्नोडन मुमिया अबू जमाल और जूलियन असांज इनकी स्टोरी है. वो और कौन सा है मैं डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट भी पढ़ रहा हूँ आजकल उसकी वायलेंस स्पीड एंड मोमेंटम जो है. He has a book? हाँ तो हमेशा I'm not only सिर्फ political social mostly 90% is non-fiction. I mean he's a political and social icon. Zizek. Okay. So yeah. तो कहने का मकसद ये 90% is non-fiction 90-80% is non-fiction hardcore like इस तरह की social political commentary होती है लेकिन 10% is also इस तरह fiction और हाँ for sure. I mean Dr. Disrespect is an icon in and of himself. For people who know इधर इसी पे छोड़ देते हैं उसकी बात. Yeah, obviously I had questions about the political messages and everything, but I think you've mentioned कि हम देखेंगे is a clear reference to Faiz Ahmed Faiz. Yeah. So people, yeah, I think it's famous. Yeah. उस वक्त I was reading Faiz जो मैंने देखेंगे लिखा था. हाँ तो इसी तरह कहने का मकसद ये I'm reading something and that shapes a lot of what I'm writing. तो मैंने सुबह आज़ादी पढ़ी और वो मेरी जिसकी लाठी उसकी भैंस का इंट्रो है ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर. फैज़ हैज़ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस मेरी राइटिंग पे. पैया में इतना क्लियर वो मैंने पापा जोलना चलूँ बाजार में वो रेफरेंस है. तो फैज़ हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट. एक्चुअली मेरी अगर इंस्पिरेशन देखो ना वो हिप हॉप के बाहर की हैं. मैंने बताया इट्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पोएट्स Beyonce. I have to mention Beyonce as a performer greatest of all time मेरे लिए. मुझे पता है सब कह रहे हैं वो माइकल जैक्सन shut up. Beyonce is the greatest performer of all time. खैर तो इस तरह अब बाहर की हैं फोक म्यूज़िक में मीशा शफ़ी टीना सानी आबदा परवीन अगर उनकी भी पुरानी म्यूज़िक की बात करें जिन्होंने फैज़ गाया हुआ है आबदा परवीन नैयरा नूर टीना सानी तो इस तरह. So Faiz is a big part of that. Big influence. And obviously Paiyyah की अगर हम specifically बात करें तो I think one thing that jumps out is के some lyrics like फिसाद जब I mean the chorus फिसाद जब पलता है तभी Paiyyah चलता है ज़मीर जब मरता है. I think it's a criticism of Pakistani society very very clearly of where we are if I'm not wrong. And then there's this other really cool I mean for us it's going to be probably interesting but for people it won't be कि सलाम ख़वानता कोई ख़बर नहीं है. I think that's a reference to Salam, right? And then everything that happened there. Either I need to mention Salam documentary Netflix. If anyone hasn't seen it, please do watch the documentary. Salam के नाम से Netflix पे. Yeah, definitely. तो what काफ़ी deep question है. I want to taper off with this sort of is के what do you think is wrong with our society as a whole with the way you view it? Obviously intolerance is one thing but obviously the answer is super complicated उसका लेकिन let me हमारी हिस्ट्री में बहुत आंसर मिलेंगे. if I can pinpoint our colonial history मतलब I think के सबसे बड़ा रूट कॉज सबसे ज़्यादा रूट्स जो है ना जो हम आज मसले फेस करते हैं इट हैज़ टू डू विद आवर कलोनियल हिस्ट्री स्पेसिफिकली ब्रिटिश रूल. तो मतलब इफ़ आई ट्रेस बैक मोस्ट इशूज़ मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैं कलोनियल हिस्ट्री पढ़ रहा था. एंड कलोनियल हिस्ट्री पढ़ना इज़ वन ऑफ द रीजंस आई मूव्ड फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू. और
तब I could trace a lot of things which I observed society में गलत to the British being here and what they did. तो हाँ, I would say उसका you can find the answer उधर. I can't pinpoint to one thing. Obviously. लेकिन you can find a lot of मसलों के roots उस era में. Right. And do you think it's valid when to say कि And I think still things haven't changed much. मतलब उस वक्त जो मसले क्रिएट किए थे वही उन्हीं की एक्सटेंशन आज नज़र आ रही है. And that's what I try to do music में as well. A lot of the songs I write, there's a double meaning उसमें. वो colonial era की भी बात हो रही होती है और current era की भी बात हो रही होती है. तो उसके बीच में I'm trying to draw a parallel. चढ़ा लो for instance. I don't know if people know this, लेकिन वो British era की भी बात हो रही है. तो देखा कैसे मिक्स किया रैप को फोक से माजी और मुस्तकबिल दोनों बसते हैं फ्लोज में. सोच में अपनी गुम कभी उलझता नहीं, शोर से पैगाम पहुँचे तेरे तक बगैर अल्फाज के ज़ोर पे. उसमें बड़े आए हमें सिखाने अपने टेढ़े तौर तरीके, घसीटे इधर उधर, तसव्वुर में कंफ्यूज क्यों, अकबर जैसी याशी तो तहम्मुल में कंजूस क्यों. तो इट डबल मीनिंग over there it's clear. Okay, there's both. Exactly. But do you think it flows generally as well? Right. You can apply it to the rap scene. You can apply it to the you can apply it to colonial era उस तरह. Yeah. Do you think it's valid to say कि colonialism British जो आए थे, so you could say कि उससे पहले भी काफ़ी चल रहा था bad scene और it was just पहले मुगल empire था and there were loads of bad stuff and like obviously inequality, everything that goes on. You just could you say कि it was just a changing of the guard? नहीं, तो इसमें थोड़ा सा आई वुड, अच्छा ऑब्वियसली मैं कोई मास्टर्स या पीएचडी नहीं की हुई मैंने. मतलब मैं सिर्फ मेरा बहुत क्रूड किस्म का अभी तक रिसर्च है. जो भी मैंने पढ़ा है बस उस पर मैं बेस करके कह रहा हूँ. देखो, एक डिफरेंसेस सोसाइटी में हमेशा होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं. और इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशिया में भी एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे हमेशा से रहे हैं. पीपल थिंक आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त हू थिंक ओह एवरीथिंग वाज परफेक्ट वंस अपॉन अ टाइम बिफोर द वाइट मैन केम इधर. नहीं, आई डोंट थिंक दैट वे. रोमिला थापुर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया, उनकी किताब है वॉइसेस ऑफ डिसेंट. वो उसमें मतलब बहुत क्लियरली उन्होंने आउटलाइन किया कि कितने दफ़ा मार्जिनलाइज किया हो जाते थे लोग इस तरह. आई थिंक लेकिन जितना ऑर्गेनिकली एक तो हो जाता है डिवाइड बिल्ड, एक होता है जो खुद से डिवाइड एंड कॉन्कर वाला, डिवाइड एंड रूल खुद से जानबूझ के किया गया होता है टू मेंटेन कंट्रोल. आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स द ब्रिटिश एरा डिफरेंट. राइट, लाइक द स्ट्रैटेजी पीछे एंड जिस एक्सटेंट तक वो फोर्सफुली डिवाइड क्रिएट किया गया, उसका इम्पैक्ट हम आज तक देख रहे हैं. एंड द अदर साइड ऑफ दैट कॉइन, लाइक इस आर्ग्यूमेंट को अगर दूसरी तरफ लेके जाएं, obviously there is such a, I think history में I'm not sure, but there is a thing in social sciences called path dependence obviously. And के जिस तरह जो चीज़ें हुई हैं वो एक path जो है आपके लिए बनाती हैं, and that's there that you are on that path, or obviously colonialism is one of them. But Bangladesh was also a colonial part of the colony at one time. India भी था. बांग्लादेश हमारे से काफ़ी हद चीज़ों में आगे निकल चुका है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में, और एक पॉइंट पे जाके आई थिंक विल बी टू फार टू कैच इन I think they're already too far to catch. yeah okay, so वो भी उसी पार्ट डिपेंडेंस से आ रहे हैं, इंडिया भी उसी पार्ट डिपेंडेंस से, हम भी उससे आए हैं. at what point could you say कि यार हमारी प्रॉब्लम्स अब colonialism को हम थोड़ा साइड पे करते हैं, अपनी गिरबां में झांक के कहते हैं कि यार what we've done for the last 75 years or so is, I mean they're not mutually exclusive, right? You could say कि बड़ा मसला था कि how much blame is on us. उसके बाद I mean उधर भी blame था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हम खुद I agree. I think we are equally उसमें हमारा blame लेना बनता है. Let me just put it this way, we didn't make the best of our lot the same way that maybe Bangladesh has done. अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँ, हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली थी, इट कोलैबोरेटेड विद द रॉन्ग पीपल. मतलब जो व्हाट कैन आई मेंशन इमरान खान, ठीक है, हाँ, व्हाट इमरान खान डज अभी अपीजिंग द कंजर्वेटिव्स और इस तरह क्लियरली, मतलब जो कि नहीं होना चाहिए. मतलब जो भी सेड टुडे कि मैंने आके 100 दिन में या 90 डेज में करप्शन खत्म कर दी थी. हाँ, लेकिन स्पेसिफिकली अबाउट हिज स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्स्टेंटली अलाइनिंग विद द कंजर्वेटिव्स, ठीक है, टीएलपी वगैरह.
और जिस तरह वो ग्रो करी है ना पार्टी, मतलब आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि हाउ माइक्रो लेवल पे कितनी वो स्ट्रांग हो चुकी है पार्टी. खैर, आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग न्यू. आई थिंक ये सालों से हमारे लीडर कर रहे हैं. आई थिंक हमारी TLP aligning themselves with people with this kind of ideology. Okay. And that's where Bangladesh is different, because Bangladesh जैसी power में आई थी, जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी, शेख मुजीबुर रहमान, one of the first things he did, might get in problems for saying this, but ये facts हैं, he eradicated जमात. उसने उसका इन्फ्लुएंस कम किया, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, जो रेप विक्टिम से उनको और जो इंडिपेंडेंट जो उनके अलग होने के बाद उनके साथ ही ट्राई टू डील बेटर. मतलब ऑब्वियसली ही हैज़ हिज फ्लॉज एज वेल. कहने का मकसद ये है, दे मेड एन एक्टिव एफर्ट टू मूव अवे उस चीज़ से जो डिवाइड ब्रिटिश ने क्रिएट किया. और सब हमारे यहाँ पे द लीडरशिप हैव ऑलवेज ट्राई टू अपीज दी सर्टन फ्यूडल किस्म का माइंड सेट उनके साथ अलाइन किया, ताकि किसी तरह वोटिंग ज़्यादा मिल जाए, सपोर्ट ज़्यादा मिल जाए. तो उसमें हमारा ब्लेम डेफिनेटली. आई थिंक उसमें एक बहुत हैरविंग चीज़ ये है कि आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो जिसके अंदर आई डोंट नो हु वाज सेइंग, बट बेसिकली वन रिलीजियस स्कॉलर, someone asked him कि यार आप क्यों नहीं ये चीज़ों को आप आके जो है वो करते क्या उसे कहते हैं क्रिटिसाइज या वो कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, सियालकोट वाले जो चीज़ हुई थी, व्हाई डोंट यू आके डिनाउंस दिस, व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग, राइट, दिस इज नॉट like this is not part of our teachings, or what where has this come from, like कुछ भी नहीं है. You're talking about the lynching? Yeah. Okay. तो his response was कि we fear, हमें खुद डर होता है कि हमने आके कुछ कहा तो हमें ना वो कर ले. Look at what परवेज खटक said प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद कि हम जब नौजवान होते हैं जज्बाती, हम भी ऐसी थे. दिस इज परवेज खटक, ठीक है. ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन किया कि हम भी ऐसे ही होते थे जब जवान होते हैं ऐसे. और you know why they I mean it would be I think people, he doesn't actually believe that, you know that, right? He doesn't actually think that, neither does the religious scholar who's not saying anything or what. I don't think they're scared. I know it doesn't matter. It doesn't matter. I think it does in a way. Obviously उसका impact में matter नहीं करता, but I think what's so scary is they have to say these things because they're scared. Exactly. Yeah. और like radicalization grassroots में इतनी ज़्यादा घुस चुकी है. I don't know what the answer is. It's just a very scary point. Yep. Sacred Games का मैं mention करूँगा, उसमें ये चीज़ बड़ी accurately दिखाई हुई है. मतलब people like the gangsterism उस शो का, लेकिन उसमें जिस तरह उसमें ये शो में ये चीज़ बड़ी अच्छी कैप्चर की गई, किस तरह पॉलिटिक्स और रिलीजन कभी religious parties use politics as a tool to. Now I think it's a Frankenstein type situation होगी है कि इन्होंने जो ज़िया के टाइम से, I think उससे पहले भी जो एक मॉन्स्टर क्रिएट करने की कोशिश की थी, वो अब उनके भी हाथ से बाहर निकल गया है. They can't control it. And एक स्टेप पीछे भुट्टो पे चले जाएं. Yeah. Okay, secular बड़ा लोग कहते हैं ओ उस वक्त मतलब he was secular, ठीक है. He was the one who passed the act के Ahmadis के against. Yeah. तो मतलब to appease a certain section. तो the blasphemy law has a very interesting history. I think I'm pretty sure you know we did a podcast on it. Well, not on it, but like Rafat Mazhar, the guy who created Swipe, the animated short film. He's done research on blasphemy laws as well. So that's very ये interesting. कौन सी series है? Swipe was a short film, animated. I think you should check it out. His research is based on blasphemy laws and intolerance and everything. So he goes and visits these a lot of these Tehreek-e-Labbaik jalsas and talks as well to understand like sociological point of view से जो है वो intolerance को देख रहा है. तो he has a very hopeful view because he says I wouldn't get up in the morning if I didn't, but I don't know how to reconcile what's happening with some sort of hope. But just lastly, man, you've done so much, or you're doing so much right now. Album, do you have an album on the cards, like proper full time? Oh no. मैं बहुत बुरे राइटिंग ब्लॉक में था लास्ट ईयर. पूरा साल क्रिएटिव ब्लॉक, नॉट जस्ट अ राइटिंग ब्लॉक, अ क्रिएटिव ब्लॉक. और वो द रीज़न व्हाई आई वाज इन राइटिंग ब्लॉक वाज टू रीजंस. एक तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि मुझे शोज जो है ना वो मोटिवेट करते हैं, बीइंग ऑन स्टेज एंड एवरीथिंग, तो वो कोविड की वजह से ही. More importantly, I started taking myself too seriously. And this is one of the biggest advices I can give to rappers जो up and coming है.
when you start taking yourself too seriously, what I mean by that is कि कभी कभी होता है कि आपका गाना बहुत अच्छा निकल जाता है. मैं बदकिस्मती है मेरा पहला गाना was खुड्डे लाइन which is still one of my biggest songs अपने छोटे से कैटलॉग में. लेकिन when you come out the gate swinging इस तरह, तो you always chase कि अच्छा हर चीज़ should be उस लेवल. तो मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो गया था एक बार पे. मैं लिटरली महीने में 1 लाइन ऐड करता था, 1 लाइन, अगले महीने 1 लाइन, पंच लाइन, ठीक है, इस तरह करके. परफेक्शनिज्म का वो इट वाज पैरालाइज, उससे भी कुछ अच्छा आगे निकल गया. लाइक बहुत स्लोली इस तरह. तो मैं आई हैड टू स्टार्ट ग्राउंड अप से, बिल्कुल गो बैक टू माई रूट्स, लिसन टू द एल्बम्स जिन्होंने मुझे शेप किया. रेवोल्यूशनरी वॉल्यूम 2, रेवोल्यूशनरी वॉल्यूम 1 बाय मॉडल टेक्निक, वॉइसेस ऑफ द वॉइसलेस, लो की, विनी पैज की एल्बम्स, और ये सब अंडरग्राउंड हार्डकोर हिप हॉप. मैंने वो एल्बम्स वापस सुनी, मैंने वो कॉन्सर्ट्स वापस देखे. मेरे बहुत वियर्ड किस्म की मतलब चीज़ें जो मुझे इंस्पायर करती हैं, सर्टन लाइव शोज आई लव टू वॉच और ये चीज़ें. तो वो मैंने वापस सी, और मैंने कहा अच्छा थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा थोड़ा ज़बरदस्ती लिखो, नई बीट बनाई जा रही, थोड़ा सा टाइम दो, हो जाएगा सही. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन. उस टाइम में मेरे बीच में जो पॉज आ गया था, आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन. तो उस 1 साल के एंड पे ना, आई हैड अबाउट 3 songs रिटन, और मैंने वो 1 वीक में अभी रिकॉर्ड किया दिसंबर में. अभी 2 आर स्टिल इन द मेकिंग. मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियोस कर रहा हूँ. एंड आई विल पुट तकरीबन 5 से 6 गाने एक साथ एज एन एल्बम. आई होप टू पुट इट आउट दिस ईयर. तो ये सीन, अभी मैं सबकी वीडियोस करूँगा, एंड देन आई विल पुट द एल्बम आउट, एंड देन आई विल रिलीज एक वीडियो एवरी वीक इस तरह करके. That's awesome. तो ये इस साल का प्लान है. That's awesome. That's awesome. Have a feature on the album as well. You will be surprised to know कौन. मैं भी नहीं बताऊंगा कौन, लेकिन जब आएगा you'll be like ये कैसे, ये how does this work? लेकिन trust me bro, that song is I can't wait. Curious कर दिया यार. मैं अब अपने दिमाग में सोच रहा हूँ कौन होते हैं. I think I'm gonna get it. But right, like, so last things that we like to do on these podcasts is you have your own segment where you can say what you want, plug yourself, talk about anything, give any message to anyone, say what you want. जो दिल में है बोल दो. Iqbal, take it away. I just want to thank On The Mic for giving me this opportunity. बुलाने के लिए, it's such an honor coming here. Setup बहुत खूबसूरत है. You guys are, मतलब I loved having this conversation. एक तो thank you. Likewise man. और thank you everyone who comes to my shows, जो आज तक मेरे shows पे हैं. मतलब you guys mean the world to me. और आप लोगों के लिए मैं करता हूँ जो मेरे लाइव शोज पे स्पेशली आते हैं. तो आई होप यू गाइज कीप सपोर्टिंग मी. वो तो क्या करूँ, एडवाइस तो नहीं मैं दे सकता. आई एम नो वन एट दिस पॉइंट कि मैं उस तरह. नो वन हू गिव्स एडवाइस इज एनीवन. हाँ, आई कुड शेयर स्पिट सम बार्स अभी. हाँ ब्रो, लेट्स गो फ्रॉम द एल्बम. लेट्स गो. ठीक है. ओके, आई हैव द सॉन्ग जिसका नाम है KK Aziz. मर्डर ऑफ हिस्ट्री. या For people who don't know who KK Aziz is, do look up KK Aziz, ठीक है. उसमें से I can share a piece. For sure. क्या, क्यों, कौन जिम्मेदार, जितने सवाल उतने रास्ते में जाल, खौफे हलाल, शौके जवाल, सर पर सवार, कुर्सी और माल, गोरों के बाद अपने लूट कर फरार, दिमाग खोल पड़ जरा आयशा जलाल, लाठी के सामने किसकी मजाल, मुहाफिज के ही बसे दिल में दजाल, सच कड़वा, धोखे लजीज, बीच की खला को खोलते मजीद, दोस्त रखे दूर, दुश्मन नजदीक, नजर हर चीज पर मुनकर नकीर, बिकते सहाफी, बिकती पुलिस, चुप रहता जो जुल्म शरीक, कत्ले तारीख का बदला ऑन बीट्स, इकबाल जैसे रैप गेम KK Aziz. Thank you. I have nothing more to say. नहीं बल्कि Yeah. Ladies and gentlemen, I will not ruin this moment any further. This has been Iqbal. It has been an absolute pleasure. On the mic. Check it out. Until next time, take it easy.